जाफर के माली को पाइप पकड़ाया और उसने पाइप पकड़ के वो फ्रेम में ही है पानी फेंक रहा है ऊपर और मैं यूं लेटा हुआ था। मोस्ट नॉर्मल फोटोग्राफर्स जो पाकिस्तान में उनकी तो 3 से 4 चीजें होती है। एक बुड्ढा बाबा की तस्वीर है, हाँ सदर में जाएगा, हाँ यहाँ पर कहीं भी बुड्ढा चाय, हाँ वो जो चाय वाला, हाँ some चाय वाला जो फेमस भी हो गया, some picture from up north, हाँ of course, and the fourth can be any random Pakistani thing. The problem is they all look the same. Yeah, is it true the stereotype के models are dumb? No, they're not dumb. I would not say that. When I came in the industry, there was some questionable models. ठीक है, but that's what questionable models मतलब no, it's everything. There was just, उनकी रात को कोई और शूट चलती थी। I started my career with songs, गाने फनी बनाए, फिर शॉर्ट वीडियोस बनाई, पर there was one thing that I saw this comedian do, Celeste Barber, कि वो फनी पिक्चर्स देती थी फैशन की, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की, और उनको फ़नी तरीके से रिक्रिएट करती थी। सो हमने हम जब भी हम देखते थे, एक पर्टिकुलरली एक सदफ़ कंवल की एक शूट थी जिसमें उसके ऊपर पानी गिर रहा है और लाइक वेट टी शर्ट टाइप पिक्चर थी, एंड आई सॉ इट एंड आई ऑटोमेटिकली थॉट ऑफ जाफ़र, नॉट बिकॉज वो भी वेट शर्ट में अच्छा लगता है, बट इसलिए क्योंकि अब मैंने सोचा कि यार ये जाफ़र हसन इज़ अ वेरी वेल नोन फैशन फोटोग्राफर, हम पहले भी एक इंटरव्यू में मिले थे साथ, तो मैंने कहा यार जाफ़र को दिखाना चाहिए इसको कुछ, वी शुड डू समथिंग विद इट। सो आई सेंट इट टू जाफ़र एंड जाफ़र ने कहा हाँ आ जाओ घर, हम पिक्चर ले लेते हैं। और फिर हमने जाफ़र के माली को पाइप पकड़ाया और उसने पाइप पकड़ के वो फ्रेम में ही है पानी फेंक रहा है ऊपर और मैं यूं लेटा हुआ था, और हमने उसको सदफ़ कंवल की पिक्चर के साथ रखा, और हीट वेव उस वक्त चल रही थी, तो हमने कहा हीट वेव का इलाज ब्रॉट यू बाय सदफ़ और वो पिक्चर्स बहुत अच्छी गई। और उसके बाद से जाफ़र और मैं कुछ जब भी हमारे पास डेटा जमा हो जाता है absurd पिक्चर्स का, फैशन की, पाकिस्तानी की, तो हम फिर उसको रिक्रिएट करते हैं। सो जाफ़र, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, इट्स हॉट। इट्स हॉट। नॉर्मली आप कैमरा के पीछे होते हैं? यस, नॉर्मली मैं कैमरा के पीछे होता हूँ, मैं शाय हूँ। शाय हैं, पर आज आप नहीं हैं आज, बट इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन एंड आई वांटेड पीपल टू नो कि एक तो आप जो मेरे साथ बचौदियाँ करते हैं वो भी एक एस्पेक्ट है, बट दैट्स नॉट योर मेन वर्क। व्हाट यू डू इज टेक रियली नाइस pictures. And how did you get into this photography business? Pure accident. I came back here for 3 months. कहाँ से आए थे आप? I came back here from Montreal. I did filmmaking. Okay. Montreal में कौन सा स्कूल है Montreal? Montreal में Concordia. So I did my filmmaking bachelor's there. Came back here 3 महीने के लिए, and that 3 months has turned into 9 years now. ठीक है, कराची ने आपको पकड़ लिया और and I never thought I'd come back and live here. Every time I try to get out, they pull me back in वाला हो गया। So I got back here. I did a few. तो 3 महीने में ऐसा क्या हुआ जो आप रह गए? I was just goofing around just for 3 months before I had to go to LA. You just liked it. You stayed just back. wanted to come back, chill here for a bit. I wasn't living here since 98. Okay. And then I did a few random pictures like everyone did with the camera. And a friend of mine made me meet somebody. He said, "Yeah, इसको दिखा लो तस्वीर है." I said, "कुछ नहीं होएगा." Showed that very day that person offered me my first fashion photography. अच्छा, yeah. क्या कोई brand था, क्या था? Mohsin Said, who's behind the Pink Trees. So our first shoot was at night time at Seaview with iPhone 5 की lights and the girl in the buggies. Girl in the buggies. वो जो light वाली बगियाँ होती हैं. जी. And that was it. And it's like, how do you do this? क्या करते हैं? What's with the poses? It's like, don't worry, we'll all do it all. हाँ, बस तुम पिक्चर निकालो. बस, that was it. And then my career started right there. तो बहुत सारे लोग हैं who are एक तो कल्चर हो गया ना, DSLR उठा के सब फोटोग्राफर बन जाते हैं. So what separates a normal photographer from a fashion photographer? Most normal photographers जो पाकिस्तान में, उनकी तो 3 से 4 चीज़ें होती है। एक बुड्ढा बाबा की तस्वीर है, हाँ,
सदर में जाएंगे, हाँ हाँ पर कहीं भी बुड्ढा चाय, हाँ वो जो चाय वाला, हाँ some चाय वाला जो फेमस भी हो गया, some picture from up north, हाँ of course, and the fourth can be any random Pakistani thing. The problem is they all look the same. yeah, They never look different. जितनी आप editing करें, जितने आप filters लगाए, you just look like one of the rest of the people with the camera. yeah, And the same advice जो मैं देता हूँ लोगों को, if you want to do something in photography, don't do that. If you do that, leave it. हाँ Pick it up, go do something different. हाँ Try it. You might suck at it, you might be good at it, but try. If you do these 4 things, you're stuck. You're not, no one's going to see it, be like, that's a fashion photographer. Yeah. मैं इसको बनाऊंगा. Nobody looks at those people. Because even that chai wala picture that got famous, the guy got famous. The guy got famous. Nobody knows the photographer. I think it was a female. Oh, अब मुझे तो पता भी नहीं But उसका again, नाम. that's it. I just don't know. Yeah. But that's how it works. Because it's so generic. It's such a generic picture, and Yeah. there's like nothing to it besides just the guy, the look, and his eyes. That's it. पर मैंने देखा है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, विजुअल आर्टिस्ट, वो बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अमेरिका में पता नहीं उनकी पेंटिंग्स है या उनका डिजिटल आर्ट पता नहीं लाखों का see- बिकता है. वो But see, कहाँ से? that's तो है हम में मतलब मैं those ये are कहना- artists. Those Yeah. are not photographers. Okay. We haven't made it as photographers in that league at all. At all. होएगा नहीं. क्यों नहीं होगा? So one of the other things that I do. हमारे पास इतना अच्छा सब कुछ है. The thing over here is that people don't consider photography art in terms of value. There's no buying value to it. So ठीक है. I've been very blessed. I've had 7 solo exhibitions since I've been back. I think more than most photographers I know, even more famous than me. But it's always 50 to 60% that only gets sold, and वो भी अपने दोस्तों में, right? There are few abroad who have 1 or 2 pieces, but otherwise, your piece will never go for $10,000 or that, no matter what it is, because the buyers here want paintings. They want something that's original. And photography is just something आप आके iPhone के साथ तस्वीर ले रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा था, तो आपको खरीदें, नहीं यार तस्वीर लगी है, Instagram पे लगाते हैं, it's like, but and you know that's it. They're like, why would we buy this? Then the other question is, ऊपर से फिर आर्ट की भी कदर नहीं है ना. आर्ट यहाँ पे आप हर कोई बोलता है यार म्यूजिशियन इतने व्यूज आ गए, पर म्यूजिक से है ना कोई कमाता नहीं है. लाइक रॉयल्टी यहाँ पे है नहीं. तो आपकी टीवी पे म्यूजिक वीडियो चल रही है, आप कोई पैसे नहीं कमा रहे उससे. रेडियो पे गाना चल रहा है, कोई पैसे नहीं कमा रहे आप उससे. अब जाके ये हो गया कि स्पॉटिफाई और ये चीज़ें आ गई जिसमें से आप थोड़ा बहुत कमाते हैं, बट वो भी नेग्लिजिबल होता है. आप बड़े बड़े से ये शमून इस्माइल इन सबसे पूछें कि आपको कितने का चेक मिलता है स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक पे, तो आप हंसेंगे क्योंकि इट्स पेनीज एंड यहाँ पे तो कदर है ही नहीं आर्ट की. सो आई गेट दैट. Then the other thing with photography over here also is कि 80% जो photo shoots होते हैं for whatever brand, you don't know who the photographer is. Yeah. The brands never put the name of the photographer. So for example, if I'm shooting for XYZ lawn tomorrow, and I think it's a great shoot, Yeah. tomorrow no other brand will know who did it unless they ask that brand. But people here don't do that. They will do back doors to find out how. But the thing is, your name is not there. So I was very lucky. तो जब पिक्चर लगती है कहीं भी, तो उधर नीचे नाम नहीं लिखा होता है फोटोग्राफर. 90% of the time आपके stars, your makeup artist, your model का नाम नहीं होता है unless it's a superstar. So it'll be like some superstar का नाम in whoever's Hunza campaign. That's it. There'll be nobody else's name in it. Yeah. And that's a problem here because chalo, photographers can still show their work. Makeup artists, their work is never recognized. Yeah. Okay, very few makeup artists have made it big, but that's because they know how to market themselves. Others are just there to live day to day. So if one makeup artist is on a very good shoot और उसका नाम नहीं है, that means the person who saw that shoot in 3 seconds का ना देखते हैं, and it's like यार उसका अच्छा काम है, कौन है, नाम नहीं पता, छोड़ दो, आगे बढ़ो, and boom, that guys will never know. Yeah. And that's happened a lot of times. There are times that early on in my career there were photographs of mine taken by other people and put on their accounts. अच्छा, ये भी तो होता है. It's but it's something you can do about it. It's just one of those things. It's like, what are you going to go write? Hey, that's my picture. Take it off. Yeah. They'll be like, कौन हो तुम? You know? So yeah. तो कोई horror story of you working here? Yes, I'll give a very good one. At the height of COVID, 2 years ago, I was at a TVC. And the TVC, I don't enjoy TVC. Why were you there? So I was there to take pictures of the star over there.
And the star was a good friend of mine also. ये बिलबोर्ड के लिए पिक्चर है? It was डिजिटल आर्ट, Billboard digital art के लिए. ठीक है. So this was June 2 years ago. ठीक है. FTC building. So if anyone knows, हाँ, in the parking FTC. lot. ठीक है, पार्किंग लॉट में. Started at 6. हाँ. सुबह, which is normal. हाँ. Okay. I've said this many times. My work will be done in 30 minutes flat. Okay, Yeah. it's very simple on TVCs. But Yeah. the problem with the way they work over here is the photography is always at the end. Yeah. So the bichara photographer, whoever it is, will be called subah. पर वो शाम तक पूरा दिन बैठा होगा. हाँ, बिल्कुल. ये मैंने देखा है. The reason why I have a lot of horror stories, but the reason why this one holds out is my poor assistant also, who has patience, halfway into it was sleeping on the floor on the concrete because he's like, I can't take it. मैं तो सो रहा हूँ यहाँ पर, तो वो लोग देखे. हमने भाई वो लोग देखे बोलेंगे ये बंदा कौन है. I'm like, don't sleep. He's like, no, I can't take it. Going into the trailer of the Star, and I'm like, hey, can you do something? Can you get my shots out of the way? यार 5 ही है. Everything went wrong that day. It rained, हवा थी, TVC की problems हो रही थी. Brand manager had a fight with the director. The Star started having a fight. Brand manager having a fight with the makeup artist. Makeup artist is this. And I'm just sitting there. I'm like, please, मुझे 5 मिनट दे दो. मेरा सर, Literally, I would मेरी फाइल. I would go sit next to the brand manager and be like, please, मुझे 5 मिनट. हाँ, आपको मिल रहे 2 घंटे, 3 घंटे. And then the next day I find out, no, next 2 days I find out I've got COVID. और वहाँ से कोविड भी मिल गया. चलें, ये पेमेंट के साथ आपको कोविड फ्री. Perfect. And that was it. It was one of the worst 16 hours. 16 hours. मुझे याद है मैं I'll tell you a good story. कि मैं वडेरे के बेटा किया और उसके बाद मुझे एक कमर्शियल मिला. उन्होंने कहा आपको गाना बनाना है 2 दिन में. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा कोई और शानी एक है प्रोड्यूसर है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, वो बनाएंगे, आपको बस लिखना है. मैंने लिखा, मैं गया और उनका एक शूट है जो 10 घंटे की शूट है और वीडियो बन जाएगी, कमर्शियल है और ये वो आपको अच्छे पैसे भी अच्छे थे. और मैं गया और लिटरली वो फॉरम के पार्किंग लॉट में शूट हुई थी और वसीम अकरम साथ थे और सोहेल जावेद डायरेक्टर थे और वो लिटरली 8-10 घंटे में वो शूट हुई है. उनमें उधर एक और सेलिब्रिटी था जो हर 5-10 मिनट बाद गाड़ी में जाता कुछ करने और बस वो जल्दी काम हो रहा था और ये यहाँ एंड लिटरली वो पूरा प्रोजेक्ट 2-2.5 दिन में एक गाना बन गया, उसकी वीडियो बन गई, उसकी सब हो गया और पैसे भी आ गए. सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स. एंड उसके बाद इतना प्रोफेशनल काम मैंने आज तक नहीं देखा. उसके बाद इट्स ऑल बीन डाउन हिल कि आपको 5 घंटे के लिए बुला के और 20 घंटा रुका दिया और ये कर लिया वो कर लिया. बहुत कॉमन है in this industry. Yeah. So that's why you won't see many fashion photographers as commercial photographers. Yeah. 3-4 commercial photographers who've just got the whole market. Yeah. Because they're used to this. हाँ. The rest of us are used to coming on a set, controlling the set, knowing kitne outfits hai, the time limit, while the brand manager's like, oh, listen, time. It's like, Yeah. we know, shoot. We're not used to someone else being like, nahin, 2 घंटे बाद. It's like, but we have everyone ready here. Yeah. So we're not used to. We're used to like quick. The setia is sitting, being like, oh, bhai, time is money. अच्छा, मॉडल्स के साथ आपका बहुत पाला पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप तो what do you is it true the stereotype के models are dumb? No, they're not dumb. I would not say that. When I came in the industry, there was some questionable models. ठीक है. But that's what questionable models मतलब like just like no, everything. There was just उनकी रात को कोई और शूट चलती थी. Yeah, they were just those kind of people that they were wonderful people, but the way they spoke was very different. The way they were too close knit, like pre-MeToo. So like they would be chummy, and you would be someone new, and you'd be like, I'm not used to this kind of closeness. It's very weird. Oh, or Janu, Jani, and you'd be like, yeah, this is a little weird because you'd be like, हम काम करने आए हैं यहाँ पे. Some of them were great people, but it was very questionable. So with that, क्या हुआ कि the Do you think MeToo has changed? A lot. Really? A lot. यहाँ तक पहुंची ये बात है. मुझे तो लगता है अभी टीवी इंडस्ट्री और इधर अभी तक यही चल रहा है, कास्टिंग काउच कल्चर के. मुझे अगर बेसास होगी तो मुझे तुम्हें रोल मिलेगा. I'm sure it happens in the fashion thing too, but now I'm sure it's very, very less. Not less, just carefully done.
क्योंकि मुझे लगता है कि मी टू बहुत एक एलीट सोसाइटी की अफेक्ट करने वाली चीज़ है. अगर मिडिल क्लास सोसाइटी में मी टू अभी नहीं कोई फर्क. मॉडल्स eventually become what elite class in their mind, right? So thanks to Me Too movement, आपके पास the new kind of models they're very vocal. They don't care if tomorrow they have a career or not. Whereas some in the past would have turned a blind eye to what's happening to somebody else. Yeah. So there's a few people who've been very vocal, not about Me Too, but just general. You could say people. कभी आपके सामने कोई अजीब ऐसी बात हो, आपने देखा हो कि ब्रांड वाला मॉडल के साथ अजीब बिहेवियर कर रहा है? I've never experienced it. I've heard it my whole life. Sorry, since I've been in this, I've always heard about के यार ये चीज करो, वो चीज करो, आपको 10 और शूट्स मिलेंगे. क्या चीज करो? मॉडल का नंबर, मॉडल को बोलो ओके कर लो इसके साथ, this and that. Things like I would hear about it. Never experienced that. I'm not saying it doesn't happen or it hasn't happened. I guess they figured कि I'm a burger का बच्चा तो they're not going to say it, right? ये यार हमें बच्ची नहीं दिलवा रहा यार. हाँ, exactly. जाफर को शूट पे नहीं बुलाना यार. The curse of my life. That's very true. With a lot of people who I know very well, they're like तुम बच्ची नहीं बुला रहा. I'm like मेरा काम किया है. Like क्या है? Right? Exactly. Photographer / दल्ला. Yeah, exactly. Yeah. I'm like no wonder I don't own my own house. But the difference in this field is that there's a lot of girls who've made their names, a few girls, and who spoke out about the right things. Now, this is not about Me Too. Like, I won't take the name of the model because I might be wrong, but one of the models I respect a lot is she called out a few designers and put pictures of some of her images ever on billboards and said, "Mujhe whitewash kiya hai." So this was about the Fair and Lovely kind of stuff. Oh, they said, I'm a brown skinned girl. How dare you do this without my permission? Ye wo. Plus uske upar se makeup ke products that they're using. And I have an issue with this. I notice this very odd things. I'm sure other photographers do too. के यहाँ तक मेकअप होएगा, even in movies, weirdly enough. और यहाँ पे गर्दन काली है, हाथ का कलर डिफरेंट है, you be like यार ये क्या हो रहा है? मल्टी कलर ये क्या हो रहा है? मैचिंग नहीं की है. And then you look at it and it disturbs you. Yeah. So it's one of the. यहाँ पे मेरे ख्याल से लोग समझ अच्छा इधर तो मेकअप का बनाम मुझे अच्छा अली अच्छा इस पे अली पे है ना निग्रो मेकअप लगेगा. मैंने कहा क्या और ये मेकअप का नाम हमने रख लिया है और जो नॉर्मल है और हमारा ये हो गया है. एक ड्रामे की शूट पे मैं था और मैंने बहुत पहले एक सिटकॉम किया था एक चैनल के लिए. तो उधर वो कहते थे कि अली आपका मेकअप है ना बहुत ट्रिकी है क्योंकि सारे गोरे हैं ना, आप काले ना, तो वो आपको मुझे गोरा करना पड़ता है ताकि वो मैच करे. मैंने कहा ये क्या पैंट सूट ले रहे हैं क्या मैचिंग? मैंने कहा मैं काला ही दिखा दो, मुझे कोई इशू नहीं है. एक फ्रेम में एक बंदा काला एक गोरा हो सकता है. नहीं फिर वो लाइटिंग चेंज. अबे लाइट कौन सी लाइटिंग हो रही है? अब देखिए आपकी लाइट वो है, मेरी लाइट ये है, बस खत्म. तूने ये थोड़ा सा डाका किया ना. बट यहाँ पे ये है कि गोरा बना दो. मेकअप का मतलब ये है कि किसी को गोरा बनाते हैं. अपने कमर्शियल्स खाली देख ले. योर कमर्शियल्स गिव इट अवे. Your actors and actresses give it away. The biggest joke is because I've been working for 9 years, so I have pictures from 9 and 8 and 7 years ago of certain models जो गोरी थी उस वक्त, who were darker than dark, and then you look at them now and you're like, not only dark, there's a lot of work you've done, and then they go in the media and they lie. I'm like, but own up to it. Yeah, there's nothing wrong. Your occupation, आपने lips बनवाए हैं या whatever you've done, you've removed ribs for like it doesn't make a difference to me. But point is, this is your career. This is what sells, and if you need to do it, बोलो जाके बोलो. अच्छा अमेरिका इधर उधर तो own करते हैं ना वो तो मतलब. Now they're anti it. अच्छा anti हो गए. I mean in the media, okay. But they're very क्योंकि वो इतनी ass ये नेचुरल तो नहीं होंगे, इतने बूब्स इतने बड़े. वो ऑब्वियसली कोई किसी ने कुछ तो डाला है. बट ये कि यहाँ पे वो नहीं मानते. No. अच्छा यहाँ पे वो कल्चर भी नहीं. आई थिंक यहाँ पे जो वर्क दैट्स बीइंग डन इज मोर टू गिव अ नेचुरल लुक. Now, but this is only and only thanks to Lahore. Okay. I have to thanks to Lahore. अच्छा. Lahore in terms of shoots has gone, you could say like 30 years ahead of Karachi. Oh really? Same as a city. अब कराची की हालत देखो, लाहौर की हालत देखो. कैसे? The new batch of photographers that came after me, they're still very young. They're very big right now. The shoots that they do, some might look silly. We made fun of a lot of them. But the thing is, they're willing to do crazy things.
In Karachi, they don't let you. Only 1 or 2 photographers will ever try it, but they also do it in their own way. They're known, they're established. Otherwise, no client will let you do this. Yeah. They'll be like, आप क्या कर रहे हैं? ये watermelon क्यों hold कर रही है? Why is she sitting on a washing machine? ये क्या है? चलो, time is money. It's like, but यार, मुझे अपना shot लेने दो. नहीं बेटा, time is money. वो white background में ऐसे करते हैं, दुपट्टा वो वाला कर दो बस. That's it. I want a 5-star lawn. अच्छा, so how does a fashion photographer make money? And is the money decent? Do you have to do side gigs? जैसे मैं as a content creator मैं videos भी बनाता हूँ, मैं pictures भी करता हूँ, मैं ads भी बनाता हूँ, तो fashion photographer को क्या financially how is it feasible? If you're lucky enough to make it इसमें as a fashion photographer, maybe in Pakistan there are, you could say, known 40 fashion photographers. ठीक है. Must be 100,000 people with camera. बिल्कुल. Out of those 40, it's always changing. The top 30, whoever it is, trending, not trending, this and that. There'll be one name that'll be removed. आ जाता है, चला जाता है, बाहर चले जाता है, वापस आ जाता है, whatever, retire, pregnant, non-pregnant, whatever. If you are lucky enough to make it, without saying how much, you could. We've done calculations. Some of the top photographers are earning as much as certain CEOs of companies. All 40, ये 40 लोग जो No, not all 40. नहीं. You could say the top 20. 20 फोटोग्राफर पाकिस्तान में कमा रहे हैं. वो भी 15 होंगे लाहौर में. 10-15 लाख महीने के कमा रहे हैं वो. ज़्यादा 25-30. Yeah. और बाकी के क्योंकि 20 फोटोग्राफर तो हो गए आपके, बाकी क्योंकि इतने it's a country of millions. The problem in this industry is you have Punjab, which likes to spend money, and it shows in their shoots, and you can not deny it. Even the most ghatiya shoot looks amazing. उनको appreciation है उस चीज की, understanding है. They understand by spending you can get things achieved. Be it a location costs money. Production helps the whole team out. Production. पर कराची तो hub है, कराची तो business hub है. कराची is the highest tax paying city, blah blah blah. So how at least your road outside proper. You know. There you go. Yeah. Khatam. Karachi mein where? Show me one road from your place to my place without a khadda. Yeah. And you know it. There's no place. No. Lahore, I can't comment on the roads, but the just when we look at BTS or a model's Instagram or a photographer's Instagram or a makeup artist or stylist ka, and you look at the production, you're like, yaar, if I had this production, I don't have to do anything. 3 guys holding an umbrella, 1 guy holding a drink, एक बंदा पंखे के साथ है, एक brand manager आपके साथ है, iPad पर दिखा रहे हैं क्या हो रहा है, कोई और बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, पति नहीं मसाज दे रहा है, कोई गोला गंडा बना रहा है. कराची में it'll be photographer and his crew, depending on आपके कितने assistants. And we're talking big brands, some of them. And they be like, production में क्या चाहिए? 1-2 बंदे चाहिए lights पर. Sir, और भी चीज़ें चाहिए. क्या चाहिए? इस्त्री वाला आपका बंदा कर सकता है. You want my assistant who holds lights to iron 40 outfits और जला दिया? तो जलाना नहीं चाहिए. But like उसका काम नहीं है ना. आपके ऑफिस से नहीं आ सकता है. कौन होएगा? Sir, you have 10,000 employees. Oh, that's true. But कौन आएगा? And that's how it works here. Karachi में it's one man doing everything. तो ये फोटोग्राफर्स की गलती नहीं है? Shouldn't you guys be like, हम ये ऐसा काम नहीं कर रही है? Okay, so काम नहीं मिलेगा. There's for every 40 photographers that are making money, there's 40 more who are willing to do it. Willing to do it at quarter the cost and everything. For example, Aji, right before I came here, I was coming right now, there was a new client that messaged me because I'm leaving day after tomorrow. So she's like, okay, I said, look, I can shoot tomorrow. Like, okay, 20 outfits. I'm like, okay, सही है. हमारे रूफटॉप पर. I'm like, do you understand the weather right now? छत पे कर लेंगे. Okay, हमारा सेट बनेगा. Okay, सही है. आपका कोई सेट वाला है? और ये छोटी कंपनी है कोई छोटी कंपनी है. I'm like, wait, आपने बोला आपका सेट बनेगा नहीं? आसिमी के कोई सेट वाला है? What I told you, tomorrow is the last day I can shoot. Okay, कहाँ कर सकते हैं? My studio, my place. Okay, आपके पास props है? I'm like, no, I don't like to really keep props. I just don't like that concept. Okay, props चाहिए? Rent it. लेके आ जाओ. आप rent करके लेके आओ. Proper props. मेरे पास वही कुर्सी होगी जो मेरे 50,000 शूट्स में यूज होगी. Like, come on, what's going on? Okay, क्या कॉस्ट होएगा? Okay, कॉस्ट भी बता दिया. ओके, बट ये फोटोग्राफर फलाना ये देते वो तो चाय भी बनाता है, वो भी करता है. I'm like, then why are you talking to me? मुझे ये बहुत ज़्यादा लगता है जब मुझे कोई कॉल करके ये बोलता है कि अच्छा आप इस काम के कितने लेंगे. मैं बताता हूँ, अच्छा वो तो ये ले रहा है.
We've had this talk how many times? मैं कहता हूँ जाओ फिर उसके पास, ये कौन सी मुझे समझ नहीं आता कि सर्विस इंडस्ट्री में आप अगर फवाद खान को एक सीन के लाख रुपए दे सकते हैं, तो अगर कोई और मांग रहा है जितने भी पैसे, तो उसको देने चाहिए, बिकॉज इट्स हिज कॉस्ट. एनी आर्टिस्ट, एनी पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस, अगर वो बोलता है मेरे इतने पैसे, आप उसे डिस्काउंट मांग सकते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि वो तो शाहरुख खान तो इतने लेता है, फवाद खान इतने क्यों ले रहा है. But that's how the industry works. I don't know about when a customer goes to a दुकान. I don't know. I don't know if I want to sapphire and be like, अबे पर आपके पास ये 5,000 के लिए खाड़ी तो सेल कर रहा है 4,000 में. You know, in our line of work, the makeup artists, the models, the photographers, because I have to deal with them most of the time. I have to put the team together most of the time because it's more controlled. अच्छा वो discount करा ले. I swear to you, it'll be over 2 to 10,000 rupees. And then sometimes I'm like, you know, this is not like a 2 lakh ka hai. You're literally fighting over 10,000. And then, you know, I call it the DHA curse. They are these so-called DHA aunties, designers. जिनके छोटे brand हैं अपने बनाए हुए. उनके brands से, and I've gone through this so many times that, you know, every time it's like, yeah, not again. Which now और यही आंटियां जो 2,000-10,000 लेबर से कम करवा रही होती हैं, जिनकी कमाई 15-10,000 रुपये होती है, वही आंटियां फिर एनजीओ में बैठी होती हैं और बात कर रही होती हैं चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, और अपनी किटी पार्टीज में राइट्स की बात कर रही होती हैं, बट they are the ones who do this and no over here take advantage. Look, I'll tell you how bad it gets. I don't know if it's a photographer's fault or what it is, the fault kiski fault है. There are times ke you will fight with the client over how much you want per outfit. Say they want a discount, 2,000 का 3,000 का discount. Tooth and nail they fight you. They are so अरे नहीं है वो budget नहीं है budget. You realize कि like okay 5 outfits है, चलो 15,000 हो रहा है. Okay, you're like यार either I make this amount of money today or I lose because of 15,000. A lot of people don't understand. They're very arrogant. They'll be like नहीं हम नहीं करेंगे. भाई एक दिन का काम है. You're making more money in one day than your maid and your driver does in a month. Keep in mind. And yet some people fight over it. But at the same time, when you go to their home, when they call you, you will walk into a DHA 2,000 yard house. You'll be like ये कहाँ गया हो, ये इसका दोस्त का होगा. नहीं, hi, how are you doing, Jaffer, कैसे? You'll see 7 latest brand new Prados and you're just like, ये क्या? It's happened so many times and then you go inside. अच्छा, ये अमीर लोग अमीर रहते ही ऐसे हैं. भाई पानी नहीं ऑफर करते. 5,000 रुपए पे लड़के ना, भाई पानी नहीं ऑफर करते. Sometimes there are times and there are certain designers who are doing decently well that literally we sat. They wouldn't let us in the house. They'd be like, आप बाहर बैठे. I'm like, oh भाई गर्मी में. So then I being myself, I'd be like, hello, inside. Come on, what's going on? पानी तक नहीं लेके आते थे. तौबा. So then you'd ask a maid. वो maid, the poor maid would be like, वो बाजी से पूछा. वो भाई पानी के लिए और खाने के लिए करबला है. इतने चालाक होते थे. These ones. See, there are certain brands I respect because what they believe is कि देखो you are shooting today. 8 के 10 घंटे का शूट है. Let's spoil them. 10,000 का बिल होगा, जो भी होगा. Point is इनके लिए जो भी खाना है ऑर्डर करो. These people who make 30-40,000 per outfit, okay, they will literally अपने किचन से कुछ छोटा छोटा खाना भिंडी फ्राई लेके आ जाएंगे और एक रोटी लेके आ जाएंगे. हाँ खा ले. Be like, but you know, can we order KFC? नहीं, you know, वो इतना महंगा शूट हो गया, this and that, and you're looking around, you're like, ये शैंडलियर की कॉस्ट क्या होगी? ये बच्चा जो अभी आ रहा है, ये तो लेटेस्ट iPhone 13 Pro 15 Max लग रहा है इसके हाथ में. 5 साल का बच्चा है. और उसके पीछे 3-3 4-4 मेड्स आ रहे हैं. हाँ, फिलिपिनो वो भी. फिलिपिनो मेड्स. You will see like an Italian marble fountain in the house and the पानी चल रहा है. Like, ये पानी पी सकते हैं? Like, what's going on? And यही होता है. And they're still thriving and surviving over here like this. And they do that. They'll message you. अच्छा आप कितना ले रहे हैं? Let's say 50,000. Okay. And you'll know it. You'll be like, ये 3-4 लोगों से बात कर रही है. For sure. हाँ, okay. And then you'll message a bit later. हाँ क्या हुआ? हाँ sorry वो दूसरा मिल गया 20,000 के अंदर. And you'll be like, you are compromising your shoot over say even 5,000. ये तो I'll give a high example. Over 5,000 rupees on a model, makeup artist, a photographer. And 99% of the time they compromise on a model. तो then they're like, आपका काम है to teach you how to model. आप पता नहीं तो कहाँ से लेके आ जाते हैं मॉडल? कोई बस ऑफिस में अच्छी लग रही. सर आजकल तो हर लड़की मॉडल है. अच्छा हाँ, वो इंस्टाग्राम की वजह से ना वो भी मॉडल. सर अच्छा ये बताएं कि मेल मॉडल्स हैं, उनका क्या? There's no future. There is no future. There was a very famous saying by a very famous person in the industry. उसने मजाक उड़ाया था. He said कि
Male models Pakistani industry में are as useless as a male nipple. Makes sense. Obviously जो सब थे they were just like आपने ये चीज़ कैसे बोली? Be like मैंने झूठ चीज़ बोली है. 2 designers होंगे, 2 ही कपड़े बनाने होंगे. They don't pay half the time. The male models, just so you know. They don't pay? तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? Sir, everyone wants to be famous. Magazine में आना. Magazine, which is finished. हाँ. Then they work hard, like they work out on their bodies. हाँ. Crazy diet होती है. बिल्कुल. And models तो 99%. तो ये जो मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं 1 ही 2 ही हैं बड़े मॉडल्स, इनके आप देखते तो ये तो बहुत इंस्टाग्राम में बहुत अमीर लगते हैं, ये घूम रहे होते हैं. एक तो है. हाँ. एक तो है. एक तो है. एक तो है. We all know. उसके फैमिली अमीर है. पर दूसरे जो लोग हैं जो एक अंकल के साथ घूमते रहते हैं दुनिया भर. कौन नहीं अंकल के साथ घूमता है in terms of male models? Tell me this सबसे पहले. हाँ. So yeah, this is going to cost me, I know that. But the point is, okay, that's the truth. There are... Boy toys. I wasn't saying that, but that's true. But there are no new male models in this industry anymore. There are 1 or 2 that have come out from Lahore in the last 3-4 years, but they don't exist. और जो है Lahore में है, and it's pretty much any बच्चा who looks like वो high school से खत्म करके आया है, that's a male model now. और फीमेल मॉडल की भी नेचुरल प्रोग्रेशन मुझे ये लगता है कि वो एक्ट्रेस बन जाती हैं. कोशिश करती हैं. That's actually very true. या आइटम सॉन्ग कर लेती है फिल्म में. Well, those are 1 or 2 people that we know. You're actually very true. They go towards TV because the older they get, and it's not their fault. You know, if their work is good, their price increases. Yeah, उनको कम काम मिलता है. कम काम मिलता है. And another thing I always tell these girls, and they don't listen, and time again, they might get more money than me, or they might get more famous than me. But the one thing is, I'll remain. You will be out. Yeah. The difference is they are not your friends. So जब आप मेक्सिको गए हुए शूट करने के लिए, he's not your friend. Yeah. You're only there because you were 10,000 rupees cheaper than that model. That's it. Bas. Damn, that's this episode was a really slap in the face because a lot of people have different impressions of the industry. बहुत showbiz बहुत ही show आपको लगता है कि बहुत ही it's a different, appealing, very amazing looking, but then eventually when you get into it, it's very gritty, it's very raw, it's very cutthroat, and it's not easy to make it. So if you think of getting into fashion, if you're thinking of getting into media generally, think about it twice because it's not an easy business, and it won't spare you. So on that note, do you have anything to add, Jaffer? Try it. It's tough, but try it. Try it. It's worth it. See the hairline? It's gone. Okay, guys. Bye-bye.